Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Raman Radha Raman Radhe Radha Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Gaura Primanande, Dayam Vishnupad Paramahamsa, Pri Vrajagacharya Stotra Satta, Sri Simad, His Divine Grace, Dinaki, Iskan BDT, Founder Acharya, Divine Grace of Prabhupada Ki, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki, Samavata Bhakta Vrinda Ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki, Jaini Thai Gaura Primanande, all glorious to the assembled devotees, all glorious to the assembled devotees, all glorious to the assembled devotees. All glorious to Sri Guru, to Sri Gauranga, all glorious to Sri Prabhupada. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Taksurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurunam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam
Vitamsya. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancana Gaurangi Hari Priye Vansakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayam Mudiraya. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Nara, Narayan Rishi, the Supreme Human Being, unto Mother Saraswati, the Goddess of Learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Prayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamasloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Dhamasamitam Uttamasloka Charitam Sayalokasya Dhamyam Swasthaya Namaha. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Surabhyay Namaha. Om Surabhyay Namaha. Mukham karoti vacharam phangom langayate girim yat kripatamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Yat kripatamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Welcome to our Bhagavatam class. Reading from Canto number 1, Chapter 2, entitled Divinity and Divine Service. Text number. Someone remember what text? Something like that. I think we read 29. Oops, 1 second. Yeah, 29 we already read.
31. 31 Taya तया vilasiteshu विलसितेषु eshu येषु guneshu गुणेषु gunavan गुणवान् eva इव antaha अन्तः pravista प्रविष्टा abhati आभाति vignanena ज्ञानेन vijrimbitaha विजृम्भितः taya vilasiteshu तया विलसितेषु guneshu gunavan eva गुणेषु गुणवान् इव anta pravista abhati अन्तः प्रविष्ट आभाति vignanena vijrimbitah. विज्ञानेन विजृम्भितः. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. After creating the material substance, the Lord Vasudeva expands himself and enters into it. भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं. And although he is within the material modes of nature and appears to be one of the created beings, he is always fully enlightened in his transcendental position. यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पथ पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं. Purport. The living entities are separated parts and parcels of the Lord, and the conditioned living entities who are unfit for the spiritual kingdom are strewn within the material world to enjoy matter to the fullest extent. जीवात्माएं भगवान की विभिन्न अंश प्रत्यंश हैं, और जो बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं हैं, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग कर सकें. As Paramatma and eternal friend of the living entities, the Lord, by one of his plenary portions, accompanies the living entities to guide them in their material enjoyment and to become witness to all activities. परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं. While the living entities enjoy the material conditions, the Lord maintains his transcendental position without being affected by the material atmosphere. जहाँ जीवात्माएं भौतिक भोग करते हैं, वहीं भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पथ पर बने रहते हैं. One of them, excuse me, in the Vedic literatures, Shruti, it is said that there are two birds in one tree. श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं. One of them is eating the fruit of the tree while the other is witnessing the actions. इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा पक्षी उसकी गतिविधियों को देख रहा है. The witness is the Lord, and the fruit eater is the living entity. यह साक्षी भगवान है और फल को खाने वाला पक्षी जीवात्मा है.
the fruit eater, living entity, has forgotten his real identity and is overwhelmed in the fruitive activities of the material conditions. But the Lord, Paramatma, is always full in transcendental knowledge. फल खाने वाला यह जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है, जबकि भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। That is the difference between the super soul and the conditioned soul. परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। The conditioned soul, the living entity, is controlled by the laws of nature, while the Paramatma, or the super soul, is the controller of the material energy. बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक है। So in this verse and purport, it is nicely being explained what is the fundamental difference between the Lord and the living entity. तो इस श्लोक में भगवान और जीव के अंदर स्वरूप में क्या डिफरेंस यानी फर्क है, उसके बारे में विस्तृत बताया गया। Living entity is described as being Veda and Abeda, simultaneously the same and simultaneously different from the Lord. जीव जो है भगवान का अंश है और एक ही समय में वो क्या है, एक जैसा है भगवान के साथ और अलग भी है। The nice example is given in the purport by Srila Prabhupada of, this is from the Mukunda Upanishad. What is it? Mundaka, okay. Mundaka Upanishad. How sometimes, the comparison of two birds within a tree, that one bird is eating the fruits of the tree and the other bird is simply witnessing the activities of the bird. तो इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी ने मुंडक उपनिषद से दो पक्षियों का उदाहरण दिया है कि कैसे एक पक्षी अपने कार्य में लगा है और दूसरा पक्षी उसको देख रहा है। Actually, there are two examples cited regarding this bird in the tree. This is one of them. Two birds are sitting. One is compared to the living entity, who is not even conscious of the other bird because he's too busy eating the fruits in the tree. तो इसमें दो प्रकार के उदाहरण हैं। तो इसमें अभी एक जो उदाहरण की चर्चा यहाँ पर है, इसमें दो पक्षी बताए गए एक वृक्ष पे और एक पंछी जो है सब फलों का आस्वादन कर रहा है और दूसरा उसको देख रहा है। So both of the birds are birds, just like the Atma and the Paramatma. The Atma is in the heart and also Paramatma. Both are Atma, but there is a major difference between both. तो ये दो पक्षी यानी क्या, दो आत्मा के जैसे, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है। The Mayavad understanding is that when the Atma merges in the Paramatma, that Atma becomes Paramatma, or the Atma is also Paramatma, loses its
identity. तो मायावादी दर्शन में क्या बताते हैं कि आत्मा जो है, एक आत्मा दूसरे आत्मा में यानी परमात्मा में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है और अपना अस्तित्व खो देता है. So that is the second example, that even though a green bird goes into a green tree, he remains a green bird within the tree, although we may not be able to see or distinguish. तो जैसे एक हरा पंछी है, वो क्या करता है, हरे पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो उस वृक्ष में विलीन हो गया और उसका अस्तित्व नष्ट हो गया. Yes. So it means that actually the jiva, living entity, although in quality the same as the Lord, is eternal, is having the three qualities of Satchitananda, but he never becomes the Paramatma, never becomes God. Yeah. तो जीव जो है वो भी भगवान का अंश होने के कारण उसमें भी सच्चिदानंद विग्रहत्व है, लेकिन फिर भी वो कभी भी भगवान नहीं बन सकता. So what is very important for us to understand is that although the Lord also enters in the material world, the Lord comes in the material world just like the living entity also comes in the material world, but the major difference is that when the Lord comes in the material world, he fully remains in his transcendental position and is not affected by the modes of material nature. तो भगवान भी इस संसार में आते हैं, प्रवेश करते हैं, लेकिन प्रवेश करने पर भी सामान्य जीव की तरह तीन गुणों से नियंत्रित नहीं होते. Our problem, living entities in the material world, our problem is that when we come in the material world, we become forgetful of our original nature because of the influence of the modes of material nature. तो अंश जो है, जीव हम सब इस संसार में आने पर तीन गुणों में बाधित हो जाते हैं और हमारा स्वयं का स्वरूप हम भूल जाते हैं. The modes of material nature are very, very powerful, as Krishna explains in the Bhagavad Gita, and they are completely overpowering the small living entity. Overpowering the living entity. Material nature is भौतिक प्रकृति जो है, हमारे छोटे जो जीव हैं, अंश हैं हम सब, इन सब के ऊपर क्या करती है, हावी होकर उनको नियंत्रित करती है. Therefore, in the Bhagavad Gita, it is explained that those who are not conscious of Krishna, those who don't have this transcendental knowledge, all of their activities are completely governed or influenced by the modes of material nature. इसीलिए भगवद गीता कहती है कि जो जीव इस संसार में गुणों से बाधित हैं, तो उनके द्वारा ही इनकी सारी गतिविधियां आच्छादित होती हैं. One is actually forced to act according to the influence of these modes of material nature. तो हर एक को क्या है, बलपूर्वक इन गुणों के प्रभाव में ही उसी प्रकार से कार्य करवाया जाता है. And because the living entity is completely covered by these modes of material nature, therefore the living entity is engaged in all kinds of material pursuits that simply bring unhappiness or suffering to the living entity. तो गुणों के कारण आच्छादित होने के कारण जीव को इस प्रकार से कार्यों में लगाया जाता है जिनके परिणाम उसके लिए दुखदायक होते हैं. This is nicely explained in the Bhagavad Gita. Mogasha mogakarmano moga jnana vicetasa raksasim asurim chaiva mohinim prakritim sritaha. Living entity, when in the material world, under the influence of the modes of material nature, all of his attempts or endeavors
are frustrated, failure. Yeah. तो जीव की जो इच्छा होती है इस श्लोक में बताया गया है कि गुणों से बाधित होकर उसके सारे इच्छाओं का क्या होता है समस्या आ जाती है उसके अंदर। Yeah. That means that it is not possible to become happy in the material world. तो इसका अर्थ है कि इस जीवन में इस संसार में भौतिक संसार में सुखी नहीं हो सकते। Therefore, in the Bhagavad Gita, Krishna declares the material world as being dukkhalayam shasvatam, a place of misery. इसीलिए भगवद गीता में भगवान भी बताते हैं कि ये संसार दुख का आलय है, घर है। So therefore, it is only when we are fortunate to come in contact with this understanding that is given in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, we come to know what is the solution to our problem in the material world. इसलिए भगवद गीता में बताया गया है कि इसका समाधान क्या है। The solution is to take shelter of the internal energy of the Lord. तो इसमें क्या है, भगवान की जो आत्मिक शक्ति है उसका आश्रय लेना, ये उत्तर है। When we take shelter of the external energy of the Lord, then all of our attempts are frustrated. जब हम बहिरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं तो हमारे हर एक कार्य का नाश हो जाता है। By nature, the living entity has to take shelter, has to be submissive, because that is our nature. Our nature is to be subordinate. Yeah. तो हम क्या है, जीव हैं, तो हमारा ये स्वरूप ही है कि हमें किसी के ऊपर आश्रित होना पड़ता है। Either we will be subordinate to the material energy, or we will be subordinate to the spiritual energy. एक तो हम भौतिक शक्ति के आश्रय में रहेंगे या फिर आध्यात्मिक शक्ति। When we choose to be subordinate to the material energy, the end result is suffering. And when we choose to be subordinate to the spiritual energy, the end result is happiness, liberation. अगर हम अंतरंगा शक्ति के शरणागत रहें तो उसका परिणाम है आनंद। This is the choice actually of the living entity in the material world. तो जीव के लिए यह विकल्प है इस भौतिक संसार में। And that choice can only be made if one is fortunate to come in contact with this knowledge or understanding. तो जीव का ये भाग्य कैसे खुलेगा, जब इस दिव्य ज्ञान के संपर्क में आएगा। In other words, a living entity also in the material world can become like Krishna. Now, the material nature, living entity also can become ये तीन गुणों से वो बाधित नहीं होगा। Yes. Seriously, the instructions given in the Vedic literatures given by the acharyas can change his even while being in the material world. आचार्य बताते हैं कि जीव इस संसार में रहते हुए भी क्या हो सकता है, आध्यात्मिक बन सकता है। Here also the example given, Paramatma bird, the witnessing bird, is conscious, is knowing each and every activity, each and every thought of the conditioned living entity. तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया दो पंछियों का, तो दूसरा पंछी परमात्मा है, वो जो जीव पंछी है इसके सारे गतिविधियों को देखता है। Yes. So that is why birth after birth, then the reaction of all of our previous activities is carried in that new form or new birth that we may be taking.
तो जीव जो है एक जन्म में जो कार्य करता है उनके कर्म का विपाक लेकर अगले शरीर में जाता है, उसको साथ में लेके जाता है. So it means that one nice example is given, just like in ordinary country, there is what is called state law. If you break the law, you will be punished. तो जैसे इस संसार में भी हम देखते हैं कि अगर सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं, उनको नियम को उल्लंघन करेंगे तो दंड मिलता है. For every wrong activity committed, then the law gives a sentence that for this crime, then you have to spend 1 year in jail. Or for this crime, more serious crime, you have to spend 10 years, like this. तो सरकार क्या बताती है कि अगर छोटा जुर्म किया है तो 1 साल की सजा मिलेगी और बहुत बड़ा किया है तो 10 साल भी मिल सकती है. Sometimes, not sometimes, most of the time, the living entity or many people in different countries, they will commit so many crimes that actually they don't have enough time in their life, because their life is too short, to actually suffer all or to receive all the years of all the sentences. They commit so many crimes. That is the condition of the living entity. We commit so many crimes, so many sinful activities that we have to again take birth to get the results of those crimes. Yeah. तो कुछ लोग इतने ज्यादा पाप करते हैं कि उनकी सजा जो होती है उनके जीवन से भी ज्यादा लंबा उनको जेल में रहना पड़ेगा. तो एक जन्म में पूरा नहीं होता तो अगले जन्म में वो पूरा करना पड़ेगा. Yeah. So that is the difference between man-made laws and God-made laws. Man-made laws are imperfect because one cannot get all the reactions to his crimes. But God-made laws, Krishna makes arrangement that we take more births to actually get the result of our good or bad activities. Yeah. तो यही फर्क है इस संसार में मनुष्यों ने बनाए हुए जो कायदे कानून है और भगवान ने जो बनाए हैं वो कायदे कानून में. तो मनुष्य को यहाँ पर एक जीवन में उस प्रकार से दंड मिलता है, लेकिन भगवान के प्रकृति के नियमों में जन्म जन्म भी वो दंड अगर है तो उसको दिया जाएगा. Yes. So actually, laws should be understood as dharma. Dharma is sometimes translated as the laws enacted by the Supreme Personality of Godhead. तो ये जो नियम बनाए गए हैं तो ये कायदे कानून क्या है, भगवान ने बनाए हैं और भगवान के द्वारा संचालित है. That is why we must know about dharma. That's why dharma is essential to understand, and that is only possible in the human form of life. Yeah. तो धर्म जानना अत्यंत आवश्यक है और केवल मनुष्य जीवन में ही धर्म समझ सकते हैं. Yes. So these instructions that we are reading from Bhagavatam help us to understand why we are suffering in the material world and how we can put an end to that suffering. तो हमें ये जानना चाहिए कि हम इस संसार में दुख क्यों भोग रहे हैं और इस दुख का अंत कैसे करेंगे. So this is the important instruction being given here, that when we become conscious of the presence of the other bird in the tree, in other words, when we become conscious of the other Atma within our body, Paramatma, then we can begin to resolve
our problem in the material world. तो इस संसार में हमें अब सारी समस्याओं का समाधान यही है कि ईश्वर जाने और समझे. Yes. So I'll just read the text again. That was text, 21. After creating the material substance, the Lord Vasudeva expands himself and enters into it. भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं. And although he is within the material modes of nature and appears to be one of the created beings, he is always fully enlightened in his transcendental position. यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं. So this topic of the modes of material nature is actually very important, and therefore there's a whole chapter, chapter 14 in the Bhagavad Gita, that is dealing with the subject matter of the modes of material nature. So this chapter, No, I'm saying that there's a chapter, the whole chapter in the Bhagavad Gita, dealing, chapter 14 of the Bhagavad Gita, is specifically dealing with the modes of material nature. भगवद गीता में ये जो तीन प्रकृति के नियम हैं, इनके कार्यकलापों का वर्णन 14वें अध्याय में विस्तृत रूप से दिया गया है. So any comment or question? किसी को कोई प्रश्न है? So any comment or question? किसी को कोई प्रश्न है? जिज्ञासा कर सकते. This especially is mentioning about Mahavishnu, Karnadaksha Vishnu. No, Paramatma is Kshirodaksha Vishnu. Kshirodaksha Vishnu. Yeah. That is not the Tathparya I was saying, the translation. The translation. That it's speaking about Paramatma, right? Yeah, Paramatma is Kshirodaksha Vishnu. Yeah. From Mahavishnu comes Garbhodakshay Vishnu. From Garbhodakshay Vishnu comes Kshirodakshay Vishnu. That Kshirodakshay Vishnu is Paramatma, who expands or is within the heart of all living entities and within the atom. Yeah. यहाँ पर जो चर्चा है, ये जो चर्चा है क्षीरोदक्षाय विष्णु के बारे में है कि जो परमात्मा है सारे ब्रह्मांड में जो जीव है. Anything else? Jai Granthara Srimad Bhagavatam ki Jai Srila Prabhupada ki. Where's our data?